So good morning everybody and once again welcome back in today's class. Today we are on the day number 30th of our class. Today's topic is interesting because we are going to be see that how we can integrate two ServiceNow platforms, SN1 and SN2. This concept is called integration. Means to join two platforms so that they can talk to each other, and we can create and update the records. Now, when we say integration in ServiceNow world, we call it a third party. Means you can integrate ServiceNow with any other tool if you wish to do. Check if you wish to do, you can integrate. Example, you can integrate ServiceNow with ServiceNow. You can integrate ServiceNow with Remedy, Jira. There are a lot of monitoring tools available. SCM, you can do. You can do with the WhatsApp. You can do with the Teams. You can do with the Slack. You just think and you can do. Okay. So any tool, if you want to integrate, you can do. But for any of the third party integration, that is how we are saying we call it a third party. Means any other tool is a third party for me. But to do the integration, few fundamentals need to be clear. Either you do ServiceNow to ServiceNow integration or to any other third party tool. It is like I want to send a letter to Pratik. What I need if I want to be sent a letter, or let's say I want to go to Pratik, I want to go to Pratik house. What I need Pratik's house number, Pratik address. I need authority to enter in his society. I need authority to be sit in his room. I need authority to eat, to consume the things which he served for me. If I convert these things in the service now, the first and foremost what we need is called endpoint URL. Means what is the link of other tool which you want to be access it. That is called the endpoint URL. Then we need authentication. What is the username password I will use to access your system? Then we do, but before this, what we do, because this is, if I practically say, I was supporting a customer 6 months back. They pick me up to drive their workshops of this thing, foundation data. But those workshops converted into the integration because they say we are not going to do manual work. We will do integration and everything will become from integration to service now. So what I need table to table level mapping. That in service now I have a user table. Then what is the table in your system? Then we go field level. I have a 5 fields in service now. What about you? अब हमारे यहाँ पे कहते हैं user. In our service now we call it the user.
Might be in some other third party tool, it's called account. Then value level mapping, table mapping, field level mapping, value level mapping. Means if you see in the incident management, we have a called state, and state has, let's say, 4 values: new, in progress, resolve, and close. Then what about you? In your tool, do you have 4 values? Do you have the 5 values? Do you have 6 values? And is the same name or not? These 3 things need to be discussed very clearly with the customers. Believe me, building an integration will take less time, but understanding that how what a customer need via integration is much time. ठीक. Then the question come how to progress further. Once you have the details in your mind, okay, I have a field level mapping, I have a table level mapping, I have value level mapping, then you have to draw your flow chart. What this means the major question comes, it will be unidirectional or it will be bidirectional integration. Itself, I can go to Pratik house or Pratik also come to my house. Uni or bidirectional. Then few technical things come. Like, are we going to be REST API or SOAP? Then it will be JSON or XML format. Okay. So multiple things we will see when we go for the discussion. Now the question comes, what is API? If you see this word API, API is called Application Platform Interface. If you see or to understand this example, you go to a restaurant. Who will come to you to take your order? Is it restaurant manager? Is it chef? Or is it waiter? Definitely, answer is waiter. You give everything your requirement to the waiter, and waiter take that to chef. Now, who is preparing the food in the background? Is it chef? Is it manager? Is it a waiter? It's chef. Chef prepare the food and give to the waiter. Waiter bring it and serve it to you. So waiter is my API, my medium to communicate, my medium to send the data, my medium to receive the data. You will see this word that you should be strong in API and all things will be there. So in simple layman language, API is something a medium of communication in service in the integration. Now do the integration, we need to be see that is any medium provided by ServiceNow or not. जैसे in the old days, if any जो ये होते थे राजा महाराजाs, this type of people,
if they want to send any letter to anybody else, तो क्या करते थे? Either they use the birds इनके खुद के तो नहीं थे, they take it the birds from a trained person, write a letter, put it in his neck and done. या फिर किसी को ह्यूमन बीइंग को भेज दे, टेक दिस लेटर एंड डिलीवर टू दिस पर्टिकुलर एड्रेस. मतलब उनका क्वेश्चन था वो बाहर से हायर करते थे. इट मींस if service now provide the API, we can use it. If not, we need to be build it. Now the question come, if you want to do the integration, will it be inbound or outbound? Inbound means, can anybody send the values to ServiceNow and ServiceNow will create a incident? Outbound means, I from the ServiceNow is sending that information to third-party tool, and in the third-party tool, the incident will get created. यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ? Good. So now what I'm going to do, we are going to be build these two APIs. ये थोड़ा सा हाफ करेंगे, ये फुल कर देंगे. Let's do inbound. So now what I need, there will be two PDIs. One is my 347171 and one is becomes one. PDI 210, something is there. This is source, this is target. And this is for the outbound. This is target. In the inbound. दोनों को करने का तरीका अलग अलग है, मतलब कंसेप्ट ही अलग है. इनबाउंड and outbound, definitely you can understand this part. I log into my instance. I never teach inbound in my any of the class. This is the first time I'm going to be pick this up topic, that how the inbound work. And believe me, this is the only topic which I teach by open my notes as well in the parallel. Because even though I did this is my 18th batch, but still I'm not, sometimes I'm not get confident and always get my notebook open and keep it just to be reminded that these are steps I have to follow it. So now I am here. Inbound means I need that third party tool send the information to me and incident get created in my service now. Okay. So now we can do web services. Under that, we have a inbound, we have an outbound. Create new. Label LNG inbound. Remember one thing. Do you remember the transfer map? Anybody? Yes, sir. What is the transfer map and why we're using transfer map? Like if we want some data from Excel to ServiceNow, Yes. And what was the step we did? like
First, we took the information from ServiceNow, like what all fields are required, and So same. we did the load data, import set, and transfer map, right? Yes, yes, sir. Because we want to be putting the data in the service now. So you can consider inbound inbound API, it like the same only. That I want to be get the data in service now. So I'm creating a new web service and target is incident table. Create transfer map. I said yes. And what field you need it? What field you want that anybody can send it to you? I say send caller. You can see here default this. Send short description. If you want to put something here, you can put it like length and accept anything you want to put it. Okay, let's say I want to be this two fields. Or let's say I want to be not, let's say description लेते हैं, easy है थोड़ा सा. ठीक है, चलो लेते हैं, कॉलर भी लेते हैं यहाँ पे. कॉलर. ठीक है. I want, so what I'm doing, I'm building a medium so that tomorrow, if Vikram want to send a letter to me, he can use this medium to send a letter. And now click on the create. My inbound API is created. Now what it's saying, कहाँ पर आके देखो ये ट्रांसफर मैप. मतलब क्या करना पड़ेगा हमें? We have to do the mapping. किसकी मैपिंग? इंपोर्ट सेट टेबल की और टारगेट टेबल की. So we have a caller, we have a description, and we have a short description. This is my target table, incident table. Caller should be go in the caller. Description should be go in the description. Short description go in the short description. QRS. This thing. यही किया था ना हमने ट्रांसफर मैप के टाइम में. मैपिंग तो ऐसे ही की थी हमने तीनों मेथड देखे, मैनुअल देखा, मैपिंग से देखा, एंड दिस वन. क्लिक ऑन द सेव. डन एंड सेव. ठीक है. Same thing, if you want to put the call stack, you can do it. Now come back here. Web service. इसको दोबारा से करते हैं. Did you notice that my web service is ready? Inbound. This is what the name we have given, right? LNG inbound. It is ready. And this is the code. This is the API. If I give to anybody of you, you can send the data to me and it will get created. ठीक है, as I say, I'm still in the learning mode. Now, how to test it? कि अतुल ठीक है, आपके में ये आपने बनाया है, is it working or not? तो कई बार क्या होता है, what happens sometime? I want to be test that if I send a letter, will it be get delivered? तो हम क्या करते हैं? We just put a fake letter with the actual address near to our letterbox, and after 2 days we got that letter in our we put the letter in the outside letterbox, and after 2 days we get that letter, same letter in our letterbox. तो मेरे पास अभी कोई टूल तो है नहीं. I don't have a third party tool.
where I can say, hey guys, can you use or consume it? What I will do, I will test it via REST API. Click on this. आगे मैं staging table. This is my import set table. ठीक है. Now we have 5 methods here. Mainly when it comes to inbound, it has a 3 method. Post, or might be on the broader level, post and get. Post means when you send something from this system to the other system. Get something when you receive, when you want something from other system to your system. ठीक है. So अभी हम क्या कर रहे हैं? This is kind of a testing area for me. This is my inbound. ठीक है. It say add some fields for the testing purpose. अब क्या था? Caller. देखिए हमारे यहाँ पे caller कौन है? User, let me. ठीक, कॉलर का नाम लेते हैं. चलो ये लेते हैं. जैसे इसका नाम नहीं है क्या? नेम. रुको, आप लोगों ने फर्स्ट नेम नहीं दिया इसमें. LNG. कहता है. कहाँ गया वो? चलो ठीक है, ये लेते हैं. Batch 18. Copy this one and put it here. Then मुझे क्या पास करना है? Short description. This is inbound API. और क्या पैरामीटर थर्ड मेरा? डिस्क्रिप्शन. ठीक है. If you notice that I am just putting my request body and service now creating a format for me. Now click on the send. Means I am writing a letter and sending to myself only, just to test that the government post office structure work here or not. Click on the send. And I got 201, which means my API is corrected. Is correct. And if you see, incident is created in my instance. देखो. So now what this mean? This mean, and if you, and I'm sure that you will hear this word that, hey, can you give me API to consume it? Means just give me this link now. So now if I give this link to Pratik or to Aneri or to Bhavya or Bhavna or to Vikram, they can use this link in their PDI and they can create
a record in my PDI. They're consuming my API. ठीक है? This is called the inbound email. Sorry, inbound API. Doubt, question, clarification. Anyone? Any doubt? Any question? कोई डाउट नहीं है. It's all clear about the integration. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. नहीं सर, अभी मतलब सब कुछ होता जा रहा है, तो like maybe once we do, then we can get some doubt. ठीक है, चलिए. Totally fair. Now the second case is outbound. ये वाला. The intention is that I will create an incident here and it should get created incident in the other instance as well. Means the point is that if I create a new incident here, and click on the submit button, an incident must get created here as well. And that is on the runtime. This is called the outbound. To do this outbound, let me close this particular part now for the time being. Come back here and search for the web service. And let's go to the outbound. SOP message, REST message, and we'll go for the REST API Explorer. हाँ तो यही तो थे अभी. हाँ यहाँ थे, लेकिन अलग तरीके से काम करेंगे इसके ऊपर. ServiceNow provide us a lot of APIs inbuilt. मतलब ऐसा नहीं कि आप एक किसी रेस्टोरेंट में गए तो आपको ही वेटर का काम करना पड़ेगा. नहीं, बहुत सारे वेटर्स हैं. मल्टीपल वेटर्स हैं. आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको किस वेटर को पकड़ना है, क्योंकि एवरी वेटर हैज अ सेपरेट, व्हाट आई कैन से, वे ऑफ वर्किंग. ठीक है. अब एक वेटर है जो सिर्फ फूड डिलीवर करता है टेबल्स पे. एक वेटर है जो सिर्फ वाटर डिलीवर करता है. एक वेटर है जो सिर्फ ड्रिंक डिलीवर करता है. एक वेटर है जो सिर्फ जो आपके यूज प्लेट्स है वो पिकअप करता है. In the same manner, in ServiceNow, we have multiple modules: incident, chain, problem, request, knowledge, user, group, location. Hundred of things are there. ServiceNow provide me a lot of APIs out of the box. If I show you the other thing, कहाँ गया इसमें? जैसे देखो ये है, अगर मैं यहाँ पे चेंज का ढूंढूं, कहाँ गया इसमें? ऐसे नहीं मिलेगा, वो SN के नाम से ढूंढना पड़ेगा. देखो ये ना, इसी namespace. So I'll put this thing only as of now. API I'm looking for API version latest. When you do the outbound, you have 5 methods: post, get, post, put, delete, and patch. This is the homework for you. Definitely nobody's going to be open this homework again. What is the difference between put and patch?
दोनों एक ही काम करता है, सेम। देखो दोनों में क्या लिखा है, एक मॉडिफाई एक अपडेट है। डिफरेंस क्या हुआ देखना टेक्निकली। नाउ आई वांट टू बी टेस्ट एपीआई। देखो हम सेम प्लेस पर ही हैं, बट इस पर हम आउटबाउंड में हैं। आई वांट टू बी टेस्ट इंसिडेंट, क्योंकि यहां पर ना आपको जुगाड़ मिलेगा अभी, शॉर्टकट ट्रिक, ट्रिक मिलेगी, ट्रिक ट्रिक मिलेगी कि हाउ आई कैन गेट माई एपीआई क्विकली। टेबल नेम सर एंड तो आई इधर कैन, हाँ जी, हाउ वी गेट दैट लिंक ऑन टॉप, लाइक व्हेन व्हाट वी हैव क्रिएटेड फॉर इनबाउंड? ये वाला। हाँ, वो तो इनबाउंड में थे, हम आउटबाउंड में है तो अभी वो दोनों अलग अलग हैं। इनबाउंड में बट पहले आपने लिंक बनाया, हाँ, सिस्टम को बताया, यू टेल टू सिस्टम दैट आई नीड दिस फील्ड्स टू बी कम। सो इसमें व्हेन, आई एम, आई हैव एवरीथिंग, आई एम जस्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर नाउ, कि मुझे किसी घर जाना तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा। ओके, तो अगर अभी इनबाउंड वाला अगर नहीं बनाए होते तो ये नहीं आता था? ये तब भी आएगा, तब भी आएगा ये, ओके। अलग अलग है ना। आप मेरे घर मत आओ, आई विल नॉट गिव यू माई एड्रेस, तो इनबाउंड खत्म हो गया। द ओनली थिंग इज दैट यू आर एबल टू कंफ्यूज बिकॉज इन द बोथ वन यू आर सेइंग दिस सेम लिंक हियर। यस सर। अभी रुक जाओ, इसको चेंज करेंगे हम आगे, ठीक है। लेट मी यूज द पोस्ट मेथड। किस टेबल का एपीआई बनाना है मुझे, इंस्टेंट टेबल का एपीआई बनाना है, ठीक है। सेम थिंग, एक बार वैल्यू पास करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो हमारा वाला था वो नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज हियर यू आर sending the data from service now, you're not expecting the data in service now. जब कुछ, when you want to bring something, then you use the inbound, import map, import set, transfer map, everything. But when you want to be send the data, it's all fine. So I'll put in this thing, short description, LNG Pathshala, description, LNG together. सेम सेम, कि भैया अब मैं अपने ही घर से लेटर भेज रहा हूँ, देखता हूँ कि मेरे को लेटर आएगा कि नहीं आएगा। बन गई एपीआई। नाउ कॉपी दिस और यहाँ आ जाओ। मतलब कि वी नो दैट हाँ एपीआईज तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एपीआई से काम चल जाएगा मेरा। नाउ आई हैव टू बी क्रिएट अ रेस्ट मैसेज, कि मुझे भेजना क्या है। नॉट रेस्ट मैसेज, इट्स अ रेस्ट एपीआई। गया रेस्ट एपीआई एक्सप्लोरर, आउटबाउंड रेस्ट मैसेज, हाँ सॉरी ये वाला सही जगह पे, क्लिक न्यू। नाउ आई वांट टू बी सेंड इट फ्रॉम 347 to 210, मतलब मेरे पीडीए से विक्रम के पीडीए पे जाएगा। What should be the end point? मुझे किसके घर जाना है? I want to go to whose place? I want to go to the Vikram's place. विक्रम का एड्रेस क्या है? ये। विक्रम के घर में इंसिडेंट टेबल पे जाना है। But Vikram is not allowing me to be enter in his house. I need authentication. If it is your client instance, you can use the OAuth 2.0 as well. But it is a normal PDI, so we are using the basics. अतुल आप मेरे घर, विक्रम बोल रहा है अतुल आप मेरे घर आओ। I said okay, but Vikram, if I come, which capacity I should come? Shall I come as your friend
Shall I come as your teacher? अतुल वो तो आपने मेरे फ्रेंड की तरह हो, ठीक है. So this is called the profile, which will get authenticate that I can go and enter in Vikram's building. And we use and we get the new profile for this integration. Name LNGT, because I want to be go into Vikram's house. So I have to be give their credential which can be validated in that particular place. So I'm giving my credential which Vikram created for me in his instance. Submit. ठीक है. And save. I am sending a letter to Vikram. I put the address. I put a barcode so that if it gets scanned, it should go. And now I want to put a message. बताओ उसे कि भाई क्या करना है, विक्रम के घर क्यों जा रहे हो, उसको क्या क्या दे के आना है इसको. Message is called again F3472-210. I want to be send the data. Post. अरे वो endpoint URL कहाँ गए, रुको इसको ओपन करते हैं. ये रहा. इस टेबल में मुझे कुछ भेजना है विक्रम के लिए. And now you click on the, and if you notice one thing, authentication मैंने कहा हाँ पेरेंट्स से पिकअप कर लो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड से नाउ इन दिस आई हैव टू पुट रिक्वेस्ट कि बस विक्रम के घर जाके करना क्या तुमने, ठीक है. लेट मी ओपन माय नोट्स एज वेल इन द पैरेलल, because I told them that sometime I got confused, so better to be check. Yeah, ठीक है. Now I have to be tell that what I want to be send it. Now if you see, it's called the mid server. A little topic we already have in the agenda, so we'll discuss. Mid server. Mid server is a small Java based application which we need to be installed at the target instance. Vikram says, Atul sir, ठीक है आपको मेरे घर आना है, but my premises is very secure. You cannot just enter and reach to my home. And you directly cannot come. I will come to pick you up. ऐसा नहीं कि आप बोला मुझे विक्रम को जाना तो they will send you, no. So mid server is called, is basically it's a 3 words combination. Manage, instrument, and I guess it's definition. Something is there. If I show this picture, you understand better. ये देखो, ये is a nice picture to be see. मेनली क्या होता है, कस्टमर कहता है आई डोंट वांट कि सर्विस नाउ इंटरेक्ट directly with my platform or my instance. We put a mid server in the middle. ServiceNow send a request to the mid server. Mid server send a request to the client. Sorry, this is my ServiceNow, this is my mid server. तो यहां से यहां रिक्वेस्ट जाती है, यहां से यहां
आउटपुट आती है। Mid server is required when we do the discovery almost. Sometimes for this kind of integrations, customers say, no, I want a mid server in the picture. Don't send anything to me directly. Send to my assistant. He will come and do the things. So mid server we use if you want to be more secure and you don't want that any tool interact with your tool directly. But in our case, there's a no mid server is there. Okay. Now what we have to do, we have to put the query parameters. कि क्या भेजना है मुझे यहां से. Short description. ठीक है. And description. ठीक है. And then click on the auto generate variables. अरे कहां गया? Did I miss something? है तो ठीक है, ऑटो जनरेट ही तो है. Auto generate order. Let me say value lng lngt. And now auto generate. Should create something here as well. Did I missing something? Let me save this. And now generate. अच्छा ठीक है. Click on the test. क्या है? Code 0. It's saying invalid query. Means what I build is not. अरे यार हम हाँ get post में आना ठीक है. यहाँ पे HTTP request. हाँ ठीक है. Sorry. Let me do one thing. There is an article which I follow. This is step by step. Let me show you, and I'll share this link with you as well. We are missing one step, I'm sure. So this has been done post. Okay, we have to do this thing. Sorry, got it. Come back here. Not this thing, we need it. Now I have to be write a content here. That what I want to be send it. और इसको लिखने का ना format है. Let me copy this format if that person is given. ये देखो. Braces on. This is the field in your table and this is the field in the target table. I can put the same name as well. क्यों? क्योंकि I'm doing the service now to service now integration. So this is what I'm doing. I'm doing the field level mapping now. So I'm passing short description for my instance to the other instance. And now click on auto generate. This has been created. And now I will test it. Put the test value lng p. Save and test.
port 201. Now let's go to this instance. Incident, open, incident get created. देखें कौन सा नंबर आया था? See here. देखो ये रहा. कहां बन गया? In the विक्रम्स PDI now. मतलब कि API तो हमारा सही काम कर रहा है. That's 100% fine. Now what I'll do, let's try to be add one more field if it work. ठीक है, क्या करते हैं हम इसमें? कहाँ गए मेरे नोट्स भाई? हाँ, हम क्या करते हैं इसमें एक पैरामीटर और पास करते हैं. Go back, open this post and do this. ठीक है, put comma and copy this again. Now I want to pass the description as well. The only benefit is that because we are doing the service out to service integration, तो दोनों tables में field और label name same है. If you are doing third party integration, then this can be different. And now remove this and auto generate. वो कह रहे आपके पास है, आपने दोबारा करना. मैंने कहा यस, दोबारा कर दो. This time I will pass LNG Pathshala and I will pass LNG together and click on the test. Code 201, it means things are fine here. Go and refresh it. Open this and verify. आगे दोनों fields. Now the question come, अतुल, ये तो static हो गया. Means it is not a runtime. तो क्या करना पड़ेगा? Come back here. I want as soon as I create incident in my PDI, it should get created in this one. PDI of Pratik. Open this and थोड़ी सी cheating करते हैं. Click on this. And copy this. Now because I want to be send the data from my PDI to Vikram's PDI, as soon as the incident get created, I will create a business rule. Click new. Visual name from dev 347 to 210. Click on advanced क्योंकि हमें script लिखना है. It should be after business rule, after insert. किस टेबल पे है? Insert टेबल पे. ये तो पता नहीं तुमने कल डिस्कस किया था कौन सी टेबल पे कब चलेगा. And click on the advance and put your code under this. And now if you see what this scripting, this code includes, number one जो मेरा method है, ये है ना हमारा 347 to 210.
ये यहाँ कॉपी करके लेके आ गया. द ओनली थिंग इज दैट इट्स शोइंग डिस्क्रिप्शन एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. तो ये तो हार्ड कोड है, तो कैसे काम करेंगे? नहीं. नाउ व्हाट वी हैव टू बी डू, बिकॉज we want to make it as a runtime. And I told you that business will work on the current data, and we need to be use the syntax here for the sending the current data. So let's come back here and pick up this change and put this thing. मैंने कहा कि जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं LNG टुगेदर की जगह हटा दो इसको, करंट डॉट डिस्क्रिप्शन, CRIPDES, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना. ये देखो, मतलब कि जो भी मैं इंसिडेंट क्रिएट करूंगा उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो इसमें कॉपी हो जाना चाहिए. एंड सेम गोज फॉर दिस थिंग, करंट डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर CRIPTI डिस्क्रिप्शन, और सेव कर दो इसको. एंड नाउ लेट्स क्रिएट एन इंसिडेंट. क्रिएट न्यू कॉलर आयुषी, short description, hi from LNG, welcome you. Click on the save. And now go back to the Vikram's instance and open, and you can see the incident get created. This is outbound APIs. Now, what we created in the inbound, I have to be give that inbound API to Vikram's one, so that if he want to be send and data to me, he can send it. कि बॉस मुझे ये चीज चाहिए, आपको सिर्फ ये चीजें पास करनी है मुझे. ठीक है, क्लियर हो गया? दिस इज द बेसिक, very basic integration stuff which we learned today. ये सिर्फ स्टार्ट है और कुछ नहीं है. The start only to give you the heads up that how integration work in ServiceNow. You can add more parameters, you can add more values, you can build your conditions as well. APIs. You can build as much as you want. And you can use it. Also, one more topic which I'm going to be skip now is called the LDAP. A long back, the LDAP was very famous, but now almost every company is using Azure or other systems to do the user integrations. To be give little bit more things to you and to be work to you, this is just a basic start for the integration. There are hundred of videos available on the YouTube which can tell you that how the end-to-end integration work. And please, if you get time, at least do the integration with my PDI. सबके पास अपने अपने PDIs हैं, that's good. So
create your API in my PDI and pass the data from my PDI to your PDI and search. Now the question come, Atul, ठीक है, Vikram has a question. Atul, incident तो create हो गया. If tomorrow you will update it, तो क्या होगा? अगर अब मैं इसको अपडेट करता हूं, मान लो मैंने इसको लिखा दिस, एक बाय वर्ड ऐड कर दिया, सेव कर दिया, यहां तो अपडेट नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने तो सिर्फ एक क्वेरी लिखी है अभी. हाउ माई सिस्टम विल नो कि मुझे इस टेबल में इस इंस्टेंस पे जाके, इस टेबल में जाके इस पर्टिकुलर इंस्टेंट को ही अपडेट करना है. There is a concept called the correlation ID. इसका बहुत बड़ा यूज होता है. चलो इसको ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. Whenever we do the integration, we populate. कहाँ रहते हैं, हमने field correlation ID. अच्छा, हमने वो व्यू चेंज कर दिया. ठीक है, let me add it again. ठीक है, this is the field which we use to keep a track. क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपने इंसिडेंट बनाया और ये जो इंसिडेंट है, दोनों का सीस आईडी अलग अलग है. ये सेम है. लेट्स सी दिस थिंग. नहीं, सेम है. दिस 3D एक्टिव डी ट्रिप. नहीं, देखो दोनों का सीस आईडी हम गलत देख रहे हैं यार. इसका सीस आईडी क्या है? सीस आईडी 2D और इसका क्या है? 3D. मतलब दोनों का सीस आईडी अलग अलग है, क्योंकि आप एपीआई कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे. सो टुमारो इफ आई सेंड अपडेट ऑन दिस, हाउ द सिस्टम विल नो कि मुझे इसी सेंड को अपडेट करना है. सो दिस कंसेप्ट is called the correlation ID, help you in that case. I am still learning on this particular part. Might be in the next batch I will able to crack this concept. ठीक है, थोड़ा सा ये होमवर्क मैं आपको देता हूं. That read it, that whenever you do the bidirectional integration, means to and from A से B से A, then this correlation ID will helpful. क्योंकि यही एक ऐसा कॉमन फैक्टर होगा दोनों इंस्टेंसेस में जो आपको बताएगा कि मुझे किस इंस्टेंट को अपडेट करना है. एंड दिस गेट ऑटो जनरेटेड. दिस गेट ऑटो जनरेटेड. सो थोड़ा सा रीड अबाउट दिस so that you can know that how updates can be work on the runtime. हमने फंडा तो बना दिया कि ठीक है भाई, बिजनेस रूल से ही काम होगा. दैट्स टोटली क्लियर. अभी बिजनेस रूल था इंसर्ट पे, अब एक बिजनेस रूल बनेगा अपडेट पे, जिसमें अपडेट्स चाहेंगे मेरे. if I let's say if I make a change, it's totally, I'm trying, not confirm that it will work or not. ठीक है, क्या था हमारा डेफ. इसको अलग से कॉपी कर लेते हैं और एक नया बनाते हैं. क्योंकि
ठीक है, dev update. We'll see. I have no guarantee that it will work. Incident update after action. Let's copy this code and save. Let's create an incident. Incident create नहीं करते, incident जो बना है उसी को अपडेट करते हैं. Incident कौन सा बनाया था अभी हमने इंसिडेंट? ये वाला, राइट? क्या था ये? था ना हाई फ्रॉम. अच्छा, हाई वाला है, ठीक है, ये वाला. नाउ लेट्स ट्राई टू अपडेट दिस वन. Hello Tata, and click on the save. Go back here, refresh. देखो उसने अपडेट नहीं किया. बिजनेस रूल रन हुआ लेकिन अपडेट नहीं किया उसने. क्यों? क्योंकि इट डिड नॉट नो. लेट्स सी कि उसने नया इंसिडेंट तो नहीं बना दिया कहीं. देखो उसने नया इंसिडेंट बना दिया. क्यों? बिकॉज सिस्टम डिड नॉट नो कि मुझे इस इंसिडेंट को अपडेट करना है. बिकॉज वी डिड नॉट पास दैट पैरामीटर टू द सिस्टम, so that system can understand better कि which incident I need to be update. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा आगे. गिव अ ट्राई थोड़ा सा. और देखो पीडीएस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. If we change now in 004, so it will take the changes? यहाँ पर आपके इंस्टेंस में. हाँ, नहीं नहीं, हाँ वो आपके तो इंस्टेंस में अगर चेंजेस किए तो यहाँ पे अभी दिखाएगा. नहीं दिखाएगा क्योंकि ना. बिजनेस रूल हमने पहले नहीं बनाया था, क्यों 003 वाले पे. तो क्या हो गया? अ, अभी अभी ये 004 वाला सर ये एक लो. बार ओपन कीजिए. हाँ. लेकिन 004 तो आपका पीडीआई में है. यहाँ पर तो ये वाला है. क्योंकि सी तो ये प्रॉब्लम इज इधर नॉट. ना 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 ना. अभी तो हमने ये प्रॉब्लम. ऐड किया ना सर, तो ये आना चाहिए ना, ये जो हाँ, कनेक्शन बट आईडी. बट डिड वी नहीं आना चाहिए ना. कोरिलेशन आईडी नहीं आना चाहिए क्योंकि ये तो हमने पास ही नहीं किया किसी एपीआई में. Did you put this in the REST API? Did you put in the post method? कहीं पास किया आपने इसको? नहीं किया ना इसको पास तो. In your business rule, we just have a current dot short description, current dot description. Did you pass this value as well? Yes or no? नो. सिस्टम को कैसे पता चलेगा भाई? राइट. तो that's what I'm saying कि this is the homework now to be see कि how I'll make sure that I can update the incident as well. और प्लस हम post method कर रहे हैं. That is wrong. To update, we have to be use the put method. इसमें देखो ये था ना. देखो ये रहा. क्लिक करो न्यू पे और डालो पुट मेथड. देखो अब बताओ इसको कि तुमने क्या पास करना है क्या नहीं पास करना. एंडपॉइंट यूआरएल क्या है तुम्हारे. लेकिन इन दिस पुट मेथड यू हैव टू बी पुट द कोरिलेशन आईडी ओनली, देन इट विल अपडेट द सेम इंसिडेंट. अदरवाइज नहीं होगा वो फिर से. एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू बी एक्सप्लोर.
ठीक है जी, क्लियर हुआ? हाँ सर। मतलब आई हैव गिवन यू द फाउंडेशन नाउ। कोई भी इंटीग्रेशन करो, इफ यू डू एनी काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, द फंडामेंटल विल बी सेम ऑलवेज। एपीआई है या रेस्ट या प्री, या दिस इज अ concept called the SPOCs, SPOKES। सर्विस नाउ के कुछ इनबिल्ट स्पॉक्स भी होते हैं। इफ यू इंस्टॉल द इंटीग्रेशन हब, यू विल सी लॉट ऑफ स्पॉक्स अवेलेबल। मिली इंटीग्रेशन हब तो हम यूज करते हैं थर्ड पार्टी के, लाइक आपको व्हाट्सएप इंटीग्रेशन करना है, स्लैक इंटीग्रेशन करना है, तो सर्विस नाउ हैव गिवन कंप्लीट सेटअप देयर। इफ आई सी, इफ यू वांट टू बी लर्न अबाउट द एपीआईज, लेट मी टेल यू दिस थिंग। यहाँ पर जाओ, डेवलपर साइट पे जाओ, एंड ये रहा। अब बताओ कौन सा एपीआई देखना है, चेंज का या इंसिडेंट का? ऐसे कैसे दिखा रहा है ये भाई? इंस्टॉल एपीआई सर्विस, देखो ये रहा। गेट बोला, कुछ नहीं करना, ये सब एपीआई के नाम है। अपना मेथड डालो और आपका काम चल जाएगा। हम क्या देखे थे? पुट, हम देखे थे इसका, कौन सा है ये, डिलीट का है ना? पुट का भी है कि कुछ? हाँ मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, राइट। पुट केस रिमोट पुट मेथड टेबल एपीआई। बोलो अपना टेबल का नाम डालो, सीसाईडी पास करो, आपका काम हो जाएगा। देख जैसे भी ये है। सो इफ यू रीड दिस, this is one of the best site I can say if you want to be read about the APIs। मैंने कहीं तो देखा था कि कहाँ पे APIs हैं सारे ये। get method, put method, go in the references, API, REST API। हम मिली REST यूज करते हैं तो REST will work for us। ये तो कुछ स्टैंडर्ड सर्विस उन्होंने दिए हमें। चेंज सेट API, CDM और CSDM का पार्ट है। देखो चेंज मैनेजमेंट की APIs आ गई। I want to create an API for the post method। बोल रहा कोई बात नहीं, ये API है। What do you want to pass it? Pass here everything। एपीआई बन जाए आपका, वो बन जाएगा, चेंज बन जाएगा दूसरे सिस्टम में जाके। सी, read it, believe me, AP integration is too interesting part in service now। You will enjoy it and you will cry it, because sometimes if I change the syntax from this to just this, it will not give any error, but you will get cry why my API is not working, क्योंकि इसका कोई एरर कोड नहीं है यहाँ पे, देखो। So few things you have to be take care very carefully। ठीक है। और जो आप कहते हैं विक्रम, देखो हमने बिजनेस टूल में कौन सा एपीआई कॉल किया है? पोस्ट मेथड वाला। अगर आपको अपडेट करना तो आपको पुट मेथड का या पैच मेथड का एपीआई बनाना, मैसेज बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे बिजनेस टूल में उसको कॉल करना पड़ेगा। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू पास, और वी हैव टू पास द कोलेशन आईडी एज वेल इन दैट वन। आई नो ओके अलॉट, सर। आई गिव टुडे, बहुत सारा हो गया माइंड में। एनी लास्ट डाउट, क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन बिफोर वी क्लोज द रिकॉर्डिंग बैच एज वेल? ठीक है। Just to be last thing here, if you remember on the day one, when we kick off this session, we pray to God to give us the power, word, and strength to make this journey good and comfortable for everybody.
Let's take 10-20 second pause. Pray to God. Thanks to God. He give us the power. He give us the word. He give us the strength. He give us the stamina. He give us the capacity. We are able to learn from each other experience. We're able to learn from each other knowledge and able to complete this batch. And generally, I say anybody who is watching this video later on my YouTube channel as well, please, thanks to God, because only with His blessings we're able to complete this one. So let's take 10-second pause, everybody, and then finally I'll close this recording and we'll go for the further discussion. Okay, so let me close the recording, everybody, and nothing much to be definitely not end. We'll take attendance.